Good morning, all of you. So, आज क्लास रे ଆମେ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया कंपनी अकाउंट्स रा ग्रुप बी बुक रा पेज नंबर होची 10.74. तो वन बाय वन क्वेश्चन ଆମେ कवर अप करिया रफ कॉपी रखिता साइड बाय साइड मु जोटा डिटेक्शन करिवि तमे सेटा को लिखि नबो. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमर इनविजिबल पर्सन. दैट मींस जहा को हमें देखि परिबा नाही ताको कहै छै इनविजिबल पर्सन. तो ये इनविजिबल पर्सन इन रिलेशन टू द कंपनी को आई जो कंपनी हूँ गोटे इनविजिबल पर्सन. दैट मीन्स जमती आम नेचुरल पर्सन को देखी पार्टी कंपनी को सेमती नेचुरल पर्सन हिसाब से आम देखिपर ना. बट कंपनी प्रेजेंस लॉ हिसाब से अच्छी ताको कह जाए इनविजिबल पर्सन. सो राइट डाउन ए कंपनी इज एन इनविजिबल पर्सन. A company is an invisible person which cannot be seen, which cannot be seen in the normal way, which cannot be seen in normal ways. Second point, point number 2. As per the Companies Act, as per the Companies Act, a company is a legal person. As per the Companies Act, a company is a legal person. किसी भी कारण जब तुम नेटवर्क इश्यूज रहे कटि जाए मझे रिपीटेशन कहबनी मत क्लास रेकर्डेड फॉर्म रे रहिबो तुम आउ थे जाइए रिव्यू करनबो हम क्लास हिसाब रे मु आगु को प्रोसीड करछि. सो एज पर द कंपनीज एक्ट ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन कमा which has which has separate identity, which has separate identity from the owner, from the owners. ब्रैकेट रे लिखि दिया शेयर होल्डर्स. फ्रॉम द ओनर्स ब्रैकेट रे लिखि दिया शेयर होल्डर्स. सेकेंड पॉइंट दिया तमरा क्वेश्चन ने वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप रो अर्थ होची जेमती कंपनी तयारी हवा पई किछि लीगल प्रोसीजर फॉलो करा जाय कंपनी रा रजिस्ट्रेशन पई. सिमिलर पैटर्न रे जेतले तमे कंपनी को बंद करिया पई चाहेबो तो लॉ रे हमरा किछि प्रोसीजर्स अछि. से प्रोसीजर को फॉलो करके हमको कंपनी बंद करिया को पड़िबो. सोल प्रोप्राइटरशिप बा पार्टनरशिप बिजनेस रे आमे जेतबळे भी चाहिबा सेतबळे बिजनेस को बंद कर दे परिबा. किंतु कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको वाइंडिंग अप दैट मींस लिक्विडेशन ना प्रोसेस फॉलो करिया को पड़िबो जोते किछि लॉ रे लिखा हितला स्टेप को हमें फॉलो करिवा एंड तापर जाकि हम कंपनी क्लोज हबो ऑफिशियली. लेख वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस. वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस. प्रोसेस को अंडरलाइन कर दिया. इज ए प्रोसेस by which a company is closed. By which a company is closed. Second point, in order to close the company, in order to close the company, certain legal steps are required to be followed. Certain legal steps are required to be followed. That is also known as liquidation of company. So winding up or liquidation, similar meaning, which is also known as liquidation of company.
Question number 3. 1 2 3 ଦେଇଛି ତମର। Okay. Question number 3. Common seal. Common seal को कंपनी सिग्नेचर बोली कुहाଯାଏ। माने कंपनी हूँ गोटे सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट्स गुड़ाक कंपनी सील पुट करा जाए जो कंपनी ना प्रिंट होगी थाए। तो ताको कंपनी सिग्नेचर बोली कुहाଯାଏ। लेख as a company is a legal person, as a company is a legal person, common seal is considered common seal is considered as the signature of a company. Common seal is considered as the signature of the company. Second point, common seal is to be affixed. AFFIXED is to be affixed on all the important documents on all the important documents of a company. All the important documents of a company. Question number 4. Perpetual succession. या को बिजनेस स्टडीज रे भी फर्स्ट ईयर रे पढ़िथिले आमे। परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन अर्थ ला आगु को बढ़ियो पीढ़ी पर पीढ़ी ताको कह जाय सक्सेशन। परपेचुअल अर्थ हो जार कोनोसी एंड न थाए। दैट मींस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर होल्डर माने आसीबे आउ जिबे किंतु कंपनी रो जो बिजनेस अछि से बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू होथुवा। से बिजनेस उपरे शेयर होल्डर रहिबा बा न रहिबा रो कोनोसी इफेक्ट पड़ेनी। सिमिलरली तुम यदि कंपेयर करिवो सोल प्रोप्राइटरशिप बा पार्टनरशिप बिजनेस रे सेतरा यदि ओनर रा डेथ हे गला ताले हे पारे कि बिजनेस तांगर क्लोज हे जिवो किंतु कंपनी केस रे ओनर रुहंतु बा न रुहंतु तापर कोनोसी इफेक्ट कंपनी रा फंक्शनिंग उपरे पड़ेनी। शेयर होल्डर थिबे शेयर होल्डर शेयर बिक्री करके पड़ेबे नुआ शेयर होल्डर आथिबे पुणी से माने बिक्री करी पड़ेबे बट कंपनी रा रनिंग जेंति चलछि सेतरे कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नाही। लेख perpetual succession refers to continuity of company operation refers to continuity of company's operation without any disturbance कमा देगी लेखा from year to year. Point number 2, we can define it as members may come and may go. Members may come and may go, but the business will continue. As ever. Business will continue as ever.
नेक्स्ट पिलाने 5 ଆଉ 6 ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଡିଂ କରିଦିଅ। ସେଥିରେ ତମର ସେୟାର ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟି ଫର୍ମ କାଟିଦିଅ around 4 ଲାଇନ୍ସ ର। लेफ्ट साइड रे लिखिवा शेयर, राइट साइड रे लिखिवा स्टॉक। तमे ऑलरेडी डिस्कशन करथिले फुल्ली पेड शेयर्स को स्टॉक बोली कुआ जाए एंड टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल गोटे छोट पोर्शन को शेयर बोली कुआ जाए जी कि फुल्ली पेड ऑफ हिताई पारे बा पार्टली पेड ऑफ हिताई पारे। तो शेयर पार्ट रे पॉइंट नंबर 1 लिखा शेयर इज ए पोर्शन, शेयर इज ए पोर्शन और पार्ट, share is a portion or a part of the total share capital of the total share capital of the company. Total share capital of the company. तातर गोटे छोटिया पिक्चराइजेशन एमती कर दियो बॉक्स करके जेमती क्लास रे आमे करथिले ता भितरे किछि रो ड्रा कर दियो कॉलम बने दियो ई टाइप रो बॉक्स जो सेल वाला इस सेल भितरे गोटे छोटिया बॉक्स को 2-3 थर पेन हाईलाइट कर दियो या को लिखि दबो शेयर एंड ए पूरा बॉक्स तले लिखि दबो शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल रे गोटे छोटिया पोर्शन को शेयर बोली कहा जाए। नेक्स्ट आस स्टॉक को स्टॉक रे लेखा स्टॉक रेफर्स टू ए फुल्ली पेड अप शेयर, ए फुल्ली पेड अप शेयर comma on which nothing is payable, on which nothing is payable। शेयर होल्डर को आउ किछि पैसा दबार न थाए स्टॉक ऊपर पूरा पैसा से दे सारछि नथिंग इज पेबल। शेयर रो सेकंड पॉइंट को ऐसा लेका शेयर मे बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। शेयर मे बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। स्टॉक रे लेखा इट इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, इट इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप। पॉइंट नंबर 3 लेखा इन केस ऑफ partly paid shares, in case of partly paid shares, the shareholder is liable, the shareholder is liable for the unpaid amount, shareholder is liable for the unpaid amount। जिति टंका से देनी सेति पाए लायबल रहबो। सपोज 6 टंका दिया आइची पार्टली पेड अप 4 टंका पाए से लायबल रहबो। स्टॉक रे पॉइंट नंबर 3 there is no such liability, there is no such liability on the shareholder, no such liability on the shareholder। क्वेश्चन नंबर 7 डिबेंचर अच्छी डिबेंचर तो टॉपिक वाइज तमरा डिलीट ही जायछि बट स्टिल ताको डिफाइन करना बा। लेखा डिबेंचर इज an डिबेंचर इज an acknowledgement
of debt, acknowledgement of debt, that means loan ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମାନିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିବେଞ୍ଚର। acknowledgement of debt from the public, from the public, ତ କେବଳ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଡିବେଞ୍ଚର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, that means ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଲୋନ ଆକାରରେ ପଇସା ନେଇପାରିବେ। Point number 2, it is a loan for the company, it is a loan for the company from the public, from the public, comma, and interest is payable, and interest is payable on a regular basis. Interest is payable on a regular basis. Full stop. Question number 8. Reserve capital. आपको हमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ला बेले कवर अप करथिले। रिजर्व कैपिटल जो पैसा मगा ही न थाए, जोटा को आजे अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड ऑफ थाए तास्ता अनकॉल्ड थाए, तो जोटा अनकॉल्ड कैपिटल ता को आजे रिजर्व कैपिटल। जेतले पैसा दरकार पड़े कंपनी को, कंपनी से तोड़े पैसा मागियो। लेखा इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as uncalled capital. It is also known as uncalled capital. That is the shares on which call is pending, on which call is pending. Point number 2, a company is making the call, a company is making the call whenever it requires money, whenever it requires money, comma, from the shareholders, from the shareholders. याको कहा जाए अनकॉल्ड कैपिटल, जो कैपिटल को हमें कॉल करना हंती। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट टर्म सहित एक्वेंटेड रहइबो। लिखि सारला परे थररु दिथर रीड करिवो। हमें स्टार्टिंग रो जो क्वेश्चन आंसर भी लिखि चंदी चैप्टर 1 नो नेगरी। मॉर्निंग रू उठिले गोटे काम करिवो। स्टार्टिंग रे प्रथमे हाफ एन आवर कहा सहित किसी भी डिस्कशन न करी छात ऊपर जदि अछि छात ऊपर बा घर बाहर बा घर पछाड़े जोटे केही भी लोक नाहांती अवेलेबल सेठी कि निजर नोट कॉपी नेकी पळेबो। हाफ एन आवर मॉर्निंग रे उठिबो, किछि कास्त कथार्ता नै, हाफ एन आवर जीवो से क्वेश्चन आंसर को थरटे खाली रीडिंग करिवो न्यूज पेपर पढला भलिया। पार्टी करके पढ़ी पारले भल कथा, यदि पार्टी न करके भी पढुछ चलिबो, बट थरटे रीड करिवो खाली बसिକି देखिवो गुडाय जिंस तमरा रिवीजन हे जीवो। तमे ऑलरेडी ताको लिखिछ, पढ़ा भी देइछ, तेणु रेगुलर बेसिस आज चैप्टर 1 पढ़ल, काली चैप्टर 2, अकाउंटिंग 2 दिन पढ़ल, बीएसएम गोटे दिन पढ़िबो, बीएसएम गोटे दिन पढ़ले इकोनॉमिक्स गोटे दिन पढ़िबो। सब दिन हाफ एन आवर मॉर्निंग रे उठिकरी न्यूज पेपर पढ़ला वाला पढ़िबो। हाफ एन आवर तमे अधिक समय पढ़ी परिबोनी, तो तुम कहि किछि लाभ भी नै। तेणु हाफ एन आवर पर तमर एनर्जी लेवल पळेबो, माइंड एपट सेपट को जीवो डेफिनेटली। बट हाफ एन आवर सकाळ उठियार जो फ्रेश मॉर्निंग जेतेबेले भी उठुछ बसिकरी कौन करिवो, गोटे थर सिंपली रीड करिवो ताकू, हेले देखिवो गुडाय जिंस तमर रिवाइज हे जीवो, चैप्टर रा कंटेंट गुडा माइंड रहइबो। हेइ पारे आज डेट तमर एग्जाम हेइ पारे बे न हेइ पारे, बट सेम जो पॉइंट्स गुडा तुम अकाउंट्स रे पढुछ बा बीएसएम रे पढुछ
सेम जिनस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तुम पुणी थे रिपीट हम तो से तुमको यहाँ भी हेल्प कर आज डेट रे लेख प्रोराटा अलॉटमेंट आमर केतले आसीबो जेतले आमर शेयर रो ओवर सब्सक्रिप्शन हबो दैट मींस कंपनी जेतिकी शेयर इश्यू करथिबो जदि ताटू अधिक एप्लीकेशन आम रिसीव कले ताको कहा जाए ओवर सब्सक्रिप्शन लेख इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स in case of over subscription of shares ब्रैकेट रे लिख दियो shares applied where shares applied is more than shares applied is more than shares issued close the bracket the has to determine management has to determine a ratio has to determine a ratio को अंडरलाइन कर दिया for the allotment of shares for the allotment of shares which is known as pro rata allotment which is known as pro rata allotment. Point number 2. In such case, the excess money received by the company may be utilized for the subsequent calls or may be refunded by the company तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलिथिबो हे पारे ताको हमें सब्सिक्वेंट कॉल ले एडजस्ट करि पारंते हमें प्रो राटा रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखिथिले किंबा हे पारे कि कंपनी कोन करबो एक्स्ट्रा पैसा फेरे देबो जेतले कॉल करबो सेतले से पैसा से माने पेमेंट करबे ताको कह जाय प्रो राटा अलॉटमेंट एतरे इंपोर्टेंट टर्म है रेशियो आ गोटे लिखिथिबो ओवर सब्सक्रिप्शन ताको अंडरलाइन कर दियो तो ओवर सब्सक्रिप्शन हेले प्रो राटा अलॉटमेंट आथिबो प्रो राटा अलॉटमेंट रे हमें रेशियो डिटरमिन करंती सेही रेशियो हिसाब रे शेयर को अलॉट करा जाय शेयर होल्डर मान को क्वेश्चन नंबर 10 एप्लीकेशन मनी लिखो it refers to the amount of money received by a company on its share application also point number 2 the following entry is passed हाइफन मार्क दे दिया तला लाइन लिखा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट
bank account debited to share application money account. Question number 11 and 12 दिटा को कंबाइन कर दवा. ऑलरेडी आम नोट कॉपी रे भी लिखिथिले. तो लेफ्ट साइड रे लिखा कॉल्स इन एरियर बाकी थिया पैसा एंड राइट साइड रे कॉल्स इन एडवांस जो पैसा आगुआ पाई चंती. कॉल्स इन एरियर आ गोटेला कॉल्स इन एडवांस. पेज नंबर 10.34 को आस. 10.34 सेटा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर आ कॉल्स इन एडवांस देछि 5टा पॉइंट. जदियो क्वेश्चन नंबर 2 मार्क पाए बट स्टिल तमे से डिफरेंस लिखि दबो कमाने 3 मार्क्स क्वेश्चन ने भी पुनी समान क्वेश्चन रिपीट हबो. तो इन दैट केस पेज नंबर 10.34 रो ऑलरेडी तो तुम कहितली नोट कॉपी रे लिखिया पे न लेखा भी थिबो खाता रे. एल्स बुक रो कॉपी कर दबो रेफरेंस मार्क कर जा आज तमरा ऑफ कॉपी रे लिखुछ याको सेटो सिंपली कॉपी पेस्ट कर दबो. नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन नंबर 13 कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व अर्थ होची कैपिटल प्रॉफिट वन टाइम प्रॉफिट. नॉर्मली इरेगुलर ट्रांजैक्शन जोटा थाए सेठु यदि हमको सडनली किछि लाभ होला जोटा कि लॉन्ग टर्म इन नेचर रा ताको कहा जाए कैपिटल प्रॉफिट बा कैपिटल रिजर्व. देखो कैपिटल रिजर्व refers to capital reserve refers to capital profit refers to capital profit for the company for the company. Point number 2, capital reserve arises out of profit from transactions which are capital in nature ब्रैकेट रे लिखि दिया लॉन्ग टर्म कमा नॉन रिकरिंग. लॉन्ग टर्म हेतिबो और नॉन रिकरिंग हेतिबो ताको कहा जाए कैपिटल रिजर्व. 3 नंबर पॉइंट से लिखि दिया इट इज सोन under the head reserves and surplus. It is shown under the head reserves and surplus. Reserves and surplus under ताको लिखा जाए बैलेंस शीट रे. In the balance sheet लिख दिया under reserves and surplus under the head reserves and surplus in the balance sheet. Next one, share forfeited account. Write down when the company
rejects the right of a shareholder rejects the right of a shareholder due to due to non-payment of calls due to non-payment of calls, then the money so received the money so received on such shares money so received on such shares is recorded in the share forfeited account is recorded in the share forfeited account. Point number 2, in case of reissue in case of reissue of the forfeited shares in case of reissue of the forfeited shares, comma, if any loss arises if any loss arises it is duly adjusted if any loss arises it is duly adjusted from the share forfeiture account from the share forfeiture account and the balance the balance if anything is left and the balance if anything is left is transferred to capital reserve is transferred to capital reserve. तो ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ଫୋରଫିଚର ରୁ ଆଣିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଫୋରଫିଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜର୍ଭ କୁ ट्रांसफर କରିଦବା। क्वेश्चन नंबर 15 ऑथराइज्ड कैपिटल authorized capital write down it is also known as nominal or maximum share capital. It is also known as nominal or maximum share capital which a company can issue which a company can issue to its shareholders to its shareholders, comma, as permitted by ROC, that is Register of Companies, as permitted by Register of Companies ROC. Point number 2, a company cannot issue shares more than the authorized share capital
more than the authorized share capital. Question number 16. It is about dividend. Dividend ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଭାଂଶ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲାଭାଂଶ, ଲାଭର ଅଂଶ, that means profit ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବୋଲି। ଲେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, dividend refers to that part of the profit that part of the profit which is distributed that part of the profit which is to the shareholders distributed to the shareholders by a company by a company. Point number 2, the dividend decision is taken by the dividend decision is taken by the board of directors taken by the board of directors and approved by the shareholders and approved by the shareholders in the general meeting. Approved by the shareholders in the general meeting. Full stop. The board of director decide करे केते डिविडेंड दबार अछि एंड तमरो शेयर होल्डर माने जनरल मीटिंग जो कंपनी रो हुए सेतरा अप्रूव करन कि हां वी हैव एक्सेप्टेड दिस रेट ऑफ डिविडेंड एंड अकॉर्डिंगली से हिसाब रे तांको डिविडेंड मिली थाए। नेक्स्ट पॉइंट तमरो पुणी थे रिपीट हेछि 17 ने स्टॉक ब्रैकेट रे लिखि दिया रेफर क्वेश्चन नंबर 6 स्टॉक ऑलरेडी हमें लिखि चंदी क्वेश्चन नंबर 6 रे रेफर क्वेश्चन नंबर 6 18 लिखा इक्विटी शेयर्स लिखा in simple words equity shares are refers equity shares refer to those shares which are not preference shares तो जोटा प्रेफरेंस शेयर नुहे सेटा होची इक्विटी शेयर। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर्स by equity shareholders लिखा equity shareholders are considered as the real owner of the business comma as they have voting rights
as they have voting rights. Question number 19, pro rata allotment. याको भी ऑलरेडी आम लिखि सारी ब्रैकेट रे लिखि दिया रेफर क्वेश्चन नंबर 9 भाव तो कौन रेफरेंस दरकार जब ऑलरेडी लिखि सारी रेफरेंस इतमें दरकार कि तुम सीरियली पढ़ो तो माइंड रहिबो कि 19 नंबर ऑलरेडी कवर अप हेची क्वेश्चन नंबर 20 देजी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हाउ इट इज ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लिख दिया प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स तो जितने शेयर रो फेस वैल्यू रू आम अधिका प्राइस इश्यू करते से प्रीमियम अराइज हुए तो ब्रैकेट रे लिखि दिया इश्यू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू इश्यू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो कह जाए प्रीमियम राइट डाउन व्हेन ए कंपनी issue its shares issue its shares at a price at a price higher than at a price higher than the face value of the shares higher than the face value of the shares it is called premium on issue of shares it is called premium on issue of shares point number 2 this premium is considered as a profit for the company is considered as a profit for the company and it is duly recorded in the securities premium account it is duly recorded in the securities premium account full stop third point से लेकर the securities premium account will appear securities premium account will appear under the head reserves and surplus under the head reserves and surplus in the balance sheet